And what this 150 means, the meaning of this 150 is the volume which will be displaced by the piston is 150 cubic centimeter. 150 cubic centimeter. That is the cubic capacity or engine capacity. We can define it as displacement volume of a particular cylinder multiplied by number of cylinder in that particular engine, multiplied by number of cylinder in that particular engine. If we are talking about multi-cylinder engine, so in case of multi-cylinder engine, what happened? We are using different cylinder. For example, I say we have a V6 engine. So V6 means we have this engine in V shape, and in this V shape, the total number of cylinders which we are having is equal to 6. Suppose for this particular engine, the cubic capacity is given as 1200 cc. The cubic capacity is given as 1200 cc. So what will be my displacement volume? My displacement volume will be cubic capacity, engine capacity 1200 upon 6, that is 200 cubic centimeter. This displacement volume, that is the engine capacity, is telling me about the total capacity of our engine, the total amount of power, total space which is available for our power generation. It is known as our cubic capacity or engine capacity. Then we have ignition delay or ID. Ignition delay, it is the small time interval between the initiation and the actual start. जब अपन ने बाइक चालू की, भाई मैंने चाबी घुमाई तो उस पे वो डिस्प्ले वगैरह ऑन हो गया. उसके बाद मैंने क्या किया, जो अपने पास पुश बटन है उसको मैंने दबाया. वो दबाने के बाद और जब एक्चुअल में मैं इंजन चालू हुआ, इन दोनों के बीच में क्या ही छोटा सा टाइम इंटरवल है. इमीडिएटली तो हुआ नहीं कि मैंने दबाया और चालू हो गया, ऐसा नहीं होता. कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का एक टाइम इंटरवल अपने पास यहाँ पे होता है, और ये जो टाइम इंटरवल हुआ, इस टाइम इंटरवल को अपन क्या बोलते हैं, इग्निशन डिले और आईडी. देन वी हैव कॉम्प्रेशन रेशियो. कॉम्प्रेशन रेशियो यानी कि इट मींस द रेशियो ऑफ total cylinder volume when the piston is at bottom dead center to the clearance volume, or more specifically the ratio of total cylinder volume when the piston is at BDC to the volume when piston is at TDC. Because what is clearance volume? Clearance volume is the volume of cylinder when the piston is at TDC. So I can simply define compression ratio as the ratio of total cylinder volume when the piston is at bottom dead center to the total cylinder volume when the piston is at top dead center, VT by VC, or it is 1 plus VS by VC. The value of this compression ratio, it is about 6 to 10 in case of SI engine and 12 to 20 in case of CI engine. For a particular engine, the compression ratio will always be fixed. It will not change. The engine which you are having in your bike, the compression ratio is that have been set there during the design. It is fixed. It is not changing continuously. After that, we have two terms, air-fuel ratio and fuel-air ratio. It is the ratio of mass of air to the mass of fuel input into the engine. Please remember, it is the ratio of mass of air to the mass of fuel input, into the engine. It is not the ratio, simple ratio of mass of air to the mass of fuel. It is the ratio of mass of air to the mass of fuel, which is getting inside into the engine cylinder.
अगर मैंने यहाँ पे सिंपली बोल दिया मास ऑफ एयर टू द मास ऑफ फ्यूल, और तो सपोज मैं व्हीकल की कैपेसिटी जो है, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 40 लीटर, तो मास ऑफ एयर टू 40 लीटर ऑफ फ्यूल, ये नहीं है। ये क्या है, जो भी फ्यूल की क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट अपने इंजन के अंदर जा रही है, उसका होता है ये एयर फ्यूल रेशियो। सॉरी, ये नेटवर्क का काफी इशू है कॉलेज में। हाँ, अपन अपन आ गए थे एयर फ्यूल रेशियो पे। So air fuel ratio is ratio of mass of air to mass of fuel input into the engine, and fuel air ratio is ratio of mass of fuel to mass of air input into the engine. अब बेसिकली ये दो टर्म कैसे हैं भाई? ये दो टर्म इसलिए है कि ये जो प्रपोर्शन होता है अपना एयर एंड फ्यूल का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ कंबशन और एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं एसआई इंजन की बात करूं, तो एसआई इंजन में क्या होता है, जब मैं फ्यूल इंजेक्शन होगा तो पहले वो एक कार्बोरेटर में जाएगा। कार्बोरेटर में क्या होगा, अपने एयर एंड फ्यूल के वहां पे